this is Shivani Kumari here, your teacher of English, and I will continue the chapter 4 in this video. We have solved the chapter 4, we have understood the chapter 4, but we have the last page number 20 from this particular chapter, chapter 4. So we have to solve this exercises from the page number 20, A, B, C, to understood the concept more of one and manyness, singular and the plural number. I will give you the details of which exercise is important to do in the notebook. Okay, we have in every chapter we always got so many exercises to solve in the book, but we don't write everything in our note copy. So don't do this, children. Okay, I already give in the last of every video of this chapter, हर चैप्टर के आखिरी वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल देती हूँ कि आपको कौन सा एक्सरसाइज अपनी कॉपी में लिखना है। उसके पहले जितने भी वीडियो जाते हैं, जितने भी डिटेल जाते हैं, उन सब में लिखती हूँ कि आपको पेज नंबर ये कंप्लीट करना है, पेज नंबर ये कंप्लीट करना है इन द बुक। इट मीन्स आपको वो चीज़ बुक में ही करनी होती, ना कि जाके उसे अपनी कॉपी में लिख लो। और कॉपी में लिखने वाले सारे एक्सरसाइजेस के डिटेल में लास्ट के वीडियो में, मतलब उस चैप्टर का जो आखिरी वीडियो होने वाला होता उसमें सारा दे देती हूँ। तो उस वीडियो तक का आप लोग वेट किया कीजिए कि लास्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैम ने सारा कॉपी में लिखने वाले डिटेल्स दिए होंगे कि हाँ कौन से एक्सरसाइजेस को कॉपी में लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब रहता है। तो उस वीडियो तक का वेट किया कीजिए कॉपी में लिखने से पहले। ओके, don't write anything in your notebook because notebook is a special thing. Notebook is important. If you write any gibberish in your notebook, anything in your notebook, then what is the difference between the book and the copy? That's why I'm saying this. You have so many exercises in each chapter, but you don't have to write each and every exercise in your notebook. So wait till the end of the video, till the end of the chapter, then you can get the important exercises detail to write down that in a book copy. Okay? So आपसे मैं उम्मीद करूँगी कि कोई भी बच्चे अपने मन से कुछ भी अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। जो मैं डिटेल्स दूंगी बस वही आपकी कॉपी में होना चाहिए। So let's start with the let's build words. So in this we have rewrite these sentences by using the plural forms of the underlined words. You may also have to take some other changes in the sentences. Write them in your note. So first of all I will write the sentences which has given. Then I will tell you what you have to do with these given sentences. Okay? Page number 20. A. Number 1. The child was sitting on the bench. The child was sitting on the bench. So, what do you have to do? We have to rewrite these sentences by using the plural forms of underlined words. Means हम लोगों को इसी सेंटेंस को दोबारा लिखना है, बट चेंज क्या करना है, जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स में लिखते हैं। ओके, एंड यू विल आल्सो हैव टू मेक सम अदर चेंजेस इन द सेंटेंसेस राइट इन योर नोट। अगर अकॉर्डिंग टू द प्लूरल कुछ और भी चेंज करना पड़ रहा है तो आप उस चेंजेस को लिख सकते हो, उसके बाद इसे कॉपी में आपको पढ़ना है। ओके, देन वी हैव वी हैव the child was sitting on the benches. तो child का plural form children. The children was का क्या हो जाएगा verb because we use was is the past form of is. Okay, whenever we use is in the present form we change, or if we change that sentence into a past, is becomes was. Okay, तो the child was का क्या हो जाएगा verb, क्योंकि वो अगर एक से ज़्यादा होता present में तो are होता तो are का verb. The children were sitting on the benches like this. Okay, the children were sitting on the benches. तो इसका पहले क्या होगा, the child was sitting on the bench. बच्चा बेंच पर बैठा था, तो बच्चे बेंच पर बैठ रहे थे। तो sitting है तो ing है तो राहा लास्ट में होना है। तो the child was sitting on the bench. बच्चा बेंच पर बैठ रहा था, बच्चे बेंचेस पर
बैठ रहे थे. The children were sitting The children were sitting on the benches. Number 2. The key to the lock is under the mat. The key to the lock. The key to the lock is under the mat. The key to the lock is under the mat. So what we have to change? Key and the lock. यहाँ पे क्या हो जाएगा? The keys to the locks. The keys to the locks are under the इसका R हो गया यहाँ पे. Number 3. I found a red leaf. I found a red leaf. I found red leaves. एक हट गया क्योंकि पहले एक का तो ए लगा, लीफ का लीफ हो गया. यहाँ पे की और लॉक था, ताला सॉरी चाबी और ताला एक एक पेयर में था, तो इसका बड़ा कीज एंड द लॉक हो गया, इसलिए यहाँ पे आर हो गया. ओके, नाउ वी हैव 2 more in this. Number 4. The army man arrived. The army man arrived yesterday. The army man arrived The army man arrived yesterday. So what we have to change in this sentence? Man word. So what is the plural form of man? Men. So what we have to write? The army men arrived yesterday. Number 5. I saw a mouse under the sofa. I saw a mouse under the sofa. So students, in the last sentence we have I saw a mouse under the sofa. So in this sentence we have to change the word mouse. Okay, mouse. I saw a mouse under the sofa. So what is the plural form of mouse? Mice. What is the plural form of mouse? Mice. I saw a mouse. ये कट जाएगा because mice is the plural form. So we can't use the mouse. A letter here. So I saw mice under the sofa. Okay. So I
saw mice under the sofa. So now I will tell you the meaning. I forgot to tell the meaning of other ones. Okay, but it's okay.